ऊंचा फाउंटेन है फिल्म्स లో అతి ఎత్తైన फाउंटेन एंजल फाउंटेन అండి హిందీ ఫిల్మ్ ఆల్ ది బెస్ట్ में देख सकते हैं तेलुगु फिल्म बेटिंग बघाराలో చూడొచ్చండి ఏంజల్ फाउंटेन ని and on to your left hand side this is the beautiful umbrella garden followed by limelight garden ये गार्डन के अंदर ज्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट्स किए जाते हैं गार्डन इज फेमस फॉर कॉर्पोरेट इवेंट इसे दिखाया गया था शाहरुख खान मूवी दिलवाले में उसका क्लाइमैक्स अभी दिखाया गया and the capacity of this limelight garden is approximately for any event purposes and the sunset of ऊपर में देखिए हवा में है इसे आप रानी मुखर्जी के आइया में देख सकते हैं बम्पी कर जंपिंग सॉन्ग में तेलुगु फिल्म आने स्वागतम చూడొచ్చండి and the round circle garden this is the Karishma garden. The specialty of this Karishma garden is in the song which color costumes the heroine wear same color flowers are decorated here. गाने के अंदर हीरोइन जो कलर के कॉस्ट्यूम्स पहनती है सेम कलर के फूल इसमें सजाए जाते हैं and the blue color generators you are seeing they are the mobile generators they are used for outdoor shooting and event purposes. Mobile generators ni outdoor shooting events ki use chestarandi for the uninterrupted power supply in the shooting time. We have total 30 mobile generators and 4 mobile buses approximately. And on to your friend, this is the jug fountain made of Roman architecture. यहाँ पर कृष्ण जी का शूटिंग हुआ था तब ये जग निकालकर कृष्ण का पुतला लगाया गया था गाने का शूटिंग हुआ है गॉड और भगवान सॉन्ग At your right hand side, this is a multi-purpose building. चंद्रमुखी फिल्म लो वेंकटापुरम पैलेस लगा చూడొచ్చండి सरकार राज सूर्यवंशी फिल्म में अमिताभ बच्चन के हवेली की तरह देख सकते हैं. Paint it green color, it becomes masjid. If you paint it white color, it becomes love symbol Taj Mahal also. And अब हम जा रहे हैं कुछ साउथ इंडियन टाइप ऑफ मार्केट प्लेसेस के लिए మనం వెళ్తున్నాం అండి కొన్ని సౌత్ ఇండియన్ మార్కెట్ ప్లేసెస్ So if you have any valuable things, within this side, because now you are entering the Mumbai Chor Bazaar. देख सकते हैं इस लोकेशन को बहुत सारे फिल्मों में बाजार की तरह दिखाया गया था చాలా इंडियन मूवीज లో మార్కెట్ ప్లేస్ లాగా చూడొచ్చండి చెన్నై एक्सप्रेस में देख सकते हैं आप इसे गफर सिंह मूवी లో చూడొచ్చండి and this open place if we keep a Gandhi statue it becomes Gandhi Nagar Nehru statue Gandhi Nagar whose statue it becomes that Nagar. And right hand side फोटो शॉप मैकेनिकल स्टोर्स जनरल स्टोर्स सिर्फ शूटिंग के टाइम पे खुले रहते हैं बाकी सब दिन उनको छुट्टी रहती है एंड ऑन टू योर राइट हैंड साइड फ्रेंड द ब्राउन कलर बिल्डिंग दैट इज द गब्बर सिंह अंताक्षरी पुलिस स्टेशन टू योर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दिलवाले फिल्म में शाहरुख खान का घर था ये and on to your left hand side in चंद्रमुखी film this is the dark master's house और आपके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखिए इतने सुंदर जो घर आप देख रहे हो एक बार इसका दरवाजा खोलकर अंदर जाओगे तो सीधा जंगल में घुस जाओगे पीछे पूरा ओपन रहता है कंट्रोल से साउथ इंडियन करेक्ट लीगली फ्रंट इंडियन कलर बिल्डिंग it's a film student office administration building all the film related groups have been administrated from this minute office only. Have you watching? What is that? Get out of this place. You must see you come again. इन फ्लोर्स को आप देख सकते हैं पुलिस गिरी फिल्म में मद्रास केव में and Telugu film Chiruta Parami Chakra Jappa Batra Shadola Chudachandi Central Jails name. And if a director wants to make a movie in the original jails, he needs lots of permission. But in films, easily jail shooting can be done without any permissions. साउंड को ड्रॉप कर रहा है भागवतम सेटिंग देखने के लिए भागवतम सेटिंग देखने के बाद उसके एग्जिट में रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन से आप कोई भी बस कैच कर सकते हो वो नेक्स्ट लोकेशन घुमाएगा आपको लगती तो सारे लैंडमार्क्स को हटा के माइल फॉल्स लगाते जैसे चेन्नई 600 किलोमीटर और हैदराबाद 600 किलोमीटर कैमरा इसको एक्सटेंड करके हाईवे जैसा दिखाया जाएगा फिल्मों में एक बिल्डिंग ब्यूटी पार्लर इन सिंगम मूवी
उसके सामने एक कॉफी शॉप, यू कैन सी दैट कॉफी शॉप इन जनता गैरेज हॉल। आपके राइट साइड पे सारे छोटे छोटे शूटिंग क्लॉथ, कम से कम 10 सीरियल्स यहीं पे शॉट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। सारे ईटीवी सीरियल्स यहीं पे शॉट करते हैं डायरेक्टर जी ने। किचन, हॉल, बेडरूम, डाइनिंग रूम, सारे रूम्स अवेलेबल है छोटे शूटिंग क्लॉथ्स के लिए। वेलकम द प्रिंसेस स्टेट ऑफ लंदन। आपका ओरिजिनल बिल्डिंग पे से कम 8 शूटिंग यहीं पे शॉट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टरबेंस। गोलमाल, रॉक स्टार, ऑल द बेस्ट, बादशाह डिटेक्टिव, हार्ट अटैक, नानक और प्रेमतो, सारी मूवीज यहीं पे शॉट हुआ था। आप सभी को एशियन में नहीं आता ना? Look at the left side, this blue building. क्या सुनील बाबू, नया गाड़ी, नया मम्मी, नया घर, बहुत बढ़िया, यहीं पे शॉट हुआ था। आपके राइट साइड में लाल बिल्डिंग, बादशाह डिटेक्टिव में शाहरुख खान जी का ऑफिस। एट योर राइट साइड लंदन का सुपरमार्केट 365 डेज बंद होता, खाली शॉटिंग के टाइम पे सारे आ जाते। ये हॉस्पिटल का ये स्पेशलिटी है कि ट्रीटमेंट फ्री बट नो लाइफ गारंटी, क्योंकि अंदर एक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर्स नहीं। A building with 4 elevations, one with hospital और ये रहा चर्च। शादी के टाइम में बाहर डाले तो चर्च बन जाए। And one more with छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट, for present इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Down parking place, बस लगाओ बस स्टैंड, ऑटो लगाओ ऑटो स्टैंड, साइकिल लगाओ साइकिल स्टैंड बन जाएगा फिल्मों में। Now at your right side, सबका original buildings in Ramoji Film City, corporate head office, Inadu and ETV Parallel। आपके राइट साइड में सामने ऊपर मीनम्मा टेम्पल, ये मीनम्मा टेम्पल को आप चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में देख सकते हैं। बिना भगवान का मंदिर है। स्टार्टिंग के टाइम पर डायरेक्टर जी के साथ भगवान जाता, प्रोड्यूसर के साथ वापस आता। आपके राइट साइड पे ऊपर देखिए मीनम्मा टेम्पल, इट्स क्लियरली विजिबल फ्रॉम हियर। Now at your right side MP building, माने बिग मल्टीपर्पज बिल्डिंग। सूर्यवंश मूवी में अमिताभ बच्चन हवेली, चंद्रमुखी मूवी में वेंकटापुरम पैलेस। 8 बजे के बाद अब हम जा रहे हैं हवा महल विजिट करने के लिए। लुक एट योर राइट साइड, वहीं पे जाने के बाद सीढ़ियां उतर के नीचे आना, नीचे आके लेफ्ट साइड, सारे गार्डन देखने के बाद लेफ्ट साइड में फिर रेस्टोरेंट। आज किसी का बर्थडे, लाइमलाइट गार्डन फॉर बर्थडे पार्टी, सिर्फ एक ही में हो जाएगा बर्थडे पार्टी।